काफ़ी ऐसे प्लगइन्स हैं जो आपको डिफरेंट तरह की फंक्शनैलिटी ऐड करने की एक ऑप्शन देते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में। इसमें कुछ प्लगइन्स हैं जो थर्ड पार्टी डेवलपर्स ने बनाए हुए हैं, while some plugins, very few of them, are actually made by WordPress themselves. इससे पहले कि मैं आपको डिटेल में बताऊं ये कौन से प्लगइन्स हैं और इनकी क्या फंक्शनैलिटीज़ और फीचर्स हैं जो ये ऑफर करते हैं, आई वुड लाइक यू टू टेक बैक अ लिटिल एंड आई वुड लाइक यू टू रिवाइज कि वर्डप्रेस क्या है। व्हाट इज वर्डप्रेस? वर्डप्रेस इज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ एन ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इस ओपन सोर्स सिस्टम में there are different features that are not just created by WordPress itself but which are created by third party developers. तो third party developers आते हैं और वो इन features को add करते हैं by using something called WordPress hooks. WordPress के hooks को use करते हुए और APIs और hooks को use करते हुए they try to interface with the WordPress system to create functionality on the top and features on the top. इसी तरह एक प्लगइन जो काफ़ी मशहूर है पूरी दुनिया में, that's called Jetpack. What is Jetpack? Jetpack allows you to add different functionality to your website with the help of a click of a button. एक बटन दबा के आप सोशल आइकन्स डाल सकते हैं, एक बटन दबा के आप एक फॉर्म डाल सकते हैं, एक बटन दबा के आप स्टैट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो Jetpack is one of the few plugins in the world that is created by WordPress itself. तो WordPress की जो पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है ऑटोमेटिक ने ये प्लगइन आपके लिए बनाया है ताकि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑप्टिमाइज वर्डप्रेस सिस्टम बना सकें। वर्डप्रेस के कुछ और प्लगइन्स भी हैं जिनमें से एक का नाम है WooCommerce, और अगर आपको याद हो तो हमने WooCommerce पहले ट्राई किया था। WooCommerce इज़ अ प्लगइन दैट अलाउज यू टू क्रिएट एन ई-कॉमर्स साइट विद अ क्लिक ऑफ अ बटन। इसी तरह आप Jetpack को यूज़ कर सकते हैं। Jetpack को आप जाके रिपोजिटरी में सर्च करें, Jetpack को इंस्टॉल करें और डिफरेंट जो फीचर्स हैं Jetpack की, डिफरेंट जो विजेट्स हैं उसको इनेबल करके you can add new functionality to your website. I highly recommend कि जब भी कोई WordPress की वेबसाइट पहली दफ़ा ट्राई कर रहा है या इंस्टॉल कर रहा है वो Jetpack का प्लगइन तो लाजमी इंस्टॉल करें, because this allows them to add different functionality. और ये फंक्शनैलिटी स्टैट से रिलेटेड हो सकती है, सोशल आइकन से रिलेटेड हो सकती है। इनफैक्ट आप इतने ज़्यादा जो डिफरेंट प्लगइन इंस्टॉल करेंगे उससे बहुत अच्छा है कि आप Jetpack को एक दफ़ा इंस्टॉल करें और उसकी फीचर्स को इनेबल करके अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को ज़्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से चलाना सीखें। एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू यूज़ एक्सटर्नल प्लगइन्स, वेदर यू वांट टू यूज़ एक्सटर्नल फीचर्स। जैसा गूगल एनालिटिक्स है एक एक्सटर्नल फीचर है, इसी तरह और सोशल आइकन्स हैं एक्सटर्नल फीचर है। काफ़ी प्लगइन्स हैं जो आप एक्सटर्नली इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। बट बिफोर यू डू दैट I would highly recommend you to try Jetpack, install Jetpack and see if Jetpack can add those features and functionality to your website which are otherwise very hard to find, hard to get, or they slow down your WordPress website. Now we'll go live and we will try out Jetpack. So अब हम try करेंगे Jetpack को। Before I install Jetpack, let's go to Google and search for Jetpack WordPress और इसको ज़रा देखते हैं डिटेल में कि प्लगइन आखिर क्या है और कैसे आपकी साइट को एक नई फंक्शनैलिटी देने में हेल्प कर सकता है। एंड जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, Jetpack is a plugin which adds different forms and functionalities to your website. So इसकी साइट पे आपको नज़र आ रहा है, it says the ideal way to experience WordPress.
take a product tour, compare plans, because इसकी कुछ features जो हैं they are paid, but other than that a lot of its features are free and free to use. So आप एक product tour ले सकते हैं. You can click on take a product tour and you can see the different functionalities it offers, from design to optimization to publishing. This is why Jetpack is so powerful. So to get started, we'll click on get started and we'll see how we can install Jetpack on our WordPress website. So you can, instead of going for the paid plans, you can go for the free plan and you can click on your site address. तो मैं आपके सामने अपनी साइट का लिंक डालूंगा withsaad.com and I click on continue. And I'll click on install Jetpack. And जैसे ही मैंने install का बटन क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि वो लोडिंग का साइन आ रहा है and it's basically trying to install it from the back end. And एकदम से उसने मुझे कहा है कि Jetpack has been installed on my website. So this is how easy it is to install Jetpack. I can now go to withsaad.com and मैं उसके backend पे जाके देखता हूँ. Or I could just start a quick tour and explore different features. Professional themes हैं, performances हैं, site security है, tools हैं, WordPress apps हैं external जो आप install कर सकते हैं. So these are the different features that are available to you while installing Jetpack. And then again, once आपके पास Jetpack is ready to roll, you can enable different features inside Jetpack. और ये आपको left पे जो Jetpack का area है उधर से accessible होंगी. आप अपना username, login password डाल के different apps और features को यहाँ से enable कर सकते हैं. Again, जिस तरह मैं आपको remind कराता चलूँ कि different features हैं जो आपके पास इस वक्त available हैं. इसमें आप अपने home page को customize कर सकते हैं without touching any code. There are built-in site performance widgets that are available to you. There is security and backups. There's effortless marketing. There's just so much that is offered to you when you install Jetpack. So again, this is totally up to you how you want to install them, you want to try them. आप WordPress apps को भी try कर सकते हैं. You can go to apps.wordpress.com/mobile and there you can use the different on-the-go apps for your WordPress website. Jetpack is amazing because it offers you different kind of new features to your website जो कि वैसे आपको different plugins के through मिलेंगे. तो आप एक plugin install करके you can get all these features together at one place. This is why Jetpack is the recommended plugin for you. Try it, see how it can help you in design and customization, how it can help you with better performance, how it can help you with security and backups, and how it can help you with effortless marketing. So go to your WordPress website and set up Jetpack. And जिस तरह इसके नाम से ही आपको जाहिर हो रहा होगा कि it will give your site wings. It will help your site grow. It will help your site load faster. It will help your site get a better design. So try it out and share it with other people that you are learning with and see कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं using Jetpack.